बस गया, बस गया, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। कितनी देर बजेगा? बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके गुड। क्या बोलते हैं पब्लिक, बोलो जरा। हमको तुमको सुनने को मांगता। कैसे हो? कैसे हो? अंकित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो रघुवीर भाई। बस करो भाई। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज। टुडे आई वोंट बी एबल टू जॉइन फॉर लॉन्ग, टेक केयर, बाय। ओके। हेलो 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 हेलो। अंकित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। आए हो तो लाइक करके जाना। मेरे को वैसा मेरा मोटो गाइस, मेरा मोटो, ठीक है, मेरा मोटो। मेरे को ना ऐसा लाइक्स वाइक्स मांगने का ये नहीं है रे, आदत नहीं है रे साला। अच्छा नहीं लगता है, मतलब है ना, कैसे बताऊं मैं तुमको। आई डोंट लाइक दिस शिट। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक आस्किंग फॉर लाइक्स। इफ पीपल लाइक इट देन दे विल, देन पीपल डोंट, देन इट्स देयर चॉइस। ऐसा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता मेरे को किसी को भी। उनको समझ में आना चाहिए कि अगर उनको पसंद आ रहा तो ही लाइक करो। लेकिन वो भी है कि ना, कि अगर तुम लाइक करोगे तो क्या होता है, यूट्यूब वुड रिकमेंड दिस टू मोर पीपल, और फिर तुम्हारा भाई वो और ज्यादा फेमस, और फेमस, और ये भाई और ज्यादा एंटरटेनिंग। अरे समझ रहे हो? अरे रे 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 ए, मैं खुद का आवाज नहीं सुनना। बाय गिड़ो। कितना पिटी है प्रीमोस, रुको दिखाता हूँ। जोंगली दोबारा, मतलब पता है क्या सीन है, ये मेरा ओरिजिनल मेन अकाउंट है। इस पे मेरा पिटी होता, ठीक है। 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो ब्रो। ट्वेल्व फाइव कितना होता है? 9, 12 फाइव 60। 59 का पिटी है लेजिट। चलो एक काम करते, एक पुल करते, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और दो मेरे पास है ऑप्शन, चलो एक पुल कर लेते हैं। इवन तो कोई आया नहीं, ए ले बूम बैम बैव, सीधा गोल्डन मांगता मेरे को। मजाक कर रहा हूँ। ओके ओके, मैजिक गाइड, ओके। तो अभी देखो जरा, मेरे को 4 स्टार कब मिला था? डायोना अभी जस्ट मिली थी। डायोना, फिर सुक्रोस, मोर 17, 17 मोर, अभी 60 हो गया, ठीक है। 17 मोर, ओके। तुम्हें क्या लगता है इधर भी 77 में ही मिलेगा? अरे यार, अरे यार, इधर है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये 2020 गाइस, 2020। वाओ, दैट इज सच अ कूल नंबर। एक सेकंड रुको जरा। ये आया क्या सर? और 2 दिन है, 2 दिन के बाद 5 पुल तो इधर से ही मिल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। एक और पुल करते हैं गाइस। अभी अभी ये नहीं, सेविंग वेविंग कुछ क्या, घंटा कुछ नहीं। और अभी गॉड लेडी वॉड लेडी का भी नखरे नहीं, सीधा जिधर खड़े उधर ही पुल करेंगे। क्योंकि भाई जो मतलब तुम लोग को, मतलब जो तुम लोग बोलोगे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे सर। सो हियर गोज अनदर वन, 61। इफ इट इज गोल्डन इट इज जोंगली। क्यों क्यों? रुको रुको रुको। 61 का पीटी है गाइस, याद रखना, याद रखना। 20, 30 था, 50 हो गया। 30 था ना। 10 मोर मे बी। ओ ओके, लेट्स गो 10 मोर, एक और पुल करेंगे। 61, 62 का पीटी, चलो ठीक है। 62 का पीटी था।
मतलब 61 का पीटी था, ये लो 62। इफ इट इज गोल्डन इट इज जोंगली। डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए भाई कि मैं हमेशा हारता रहता हूँ। हारने की बात ही नहीं है, मिलता ही नहीं है जल्दी। अरे उत्कर्ष भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल, कैसे हो ब्रदर? आई सी दैट यू आर न्यू, हाउ आर यू? अरे तो राइम हो गया, दैट इज एक्चुअली ग्रेट देन। चलो भाई, सबसे, अरे माँ कसम मैंने अपना रेजन यूज नहीं किया, किसी ने देखा नहीं ना, गाली मत देना मेरे को। अभी यूज करता हूँ मैं, रुको सर। अरे माँ कसम पूरा क्या करे। मैंने अपना डेली कमीशन तो किया हुआ है ना इस अकाउंट में। हाँ मैंने डेली कमीशन किया है। रेजन को यूज करने का तरीका क्या है, मैं जाके डिवॉल्यून को मुक्की मार के आता हूँ, ठीक है गाइस? मैं डिवॉल्यून को मुक्की मार के आएंगे। ब्रो इतना दुखी क्यों हो? है दुखी किधर है? मैं आई एम नॉट दुखी। देखो मेरे को देख के दुखी, मैं दुखी लग रहा हूँ? मैं सैडनेस वाली वाइब दे रहा हूँ क्या? नहीं ब्रो, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट दुखी, आई एम नॉट एनीथिंग। अभी जाके डिवॉल्यून को फटके मार के आऊंगा, सब कुछ एकदम जगह पे ठीक आ जाए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके लेट्स गो। वो भी सीधा 90 लेवल। अरे मजाक नहीं, मजाक की बात नहीं। आ जा भाई डिवॉल्यून, अरे आ जा भाई। ये मेरे को लगा नीचे गिरते क्या भाई? ओके नहीं गिरते, थैंक गॉड। मेरे को पता नहीं था भाई, मैं कभी इतना स्प्रिंट नहीं किया। याहू आ जा भाई डिवॉल्यून। अभी ऊपर चढ़ो, ये ऐसा है एकदम नीचे प्लंज करेगा, फिर मेरा टाइम है, ऐसा करके ई मारो, फिर इधर चलो, फिर ये करो, फिर इधर चलो, 1 2 बस। अभी देखो डिवॉल्यून को तो कभी तुमने देखा है एक झटके में मरते हुए? आज देखोगे। ए मर जा डिवॉल्यून, साले इज्जत की बात है। अरे यार मेरे को लगा नहीं हो पाएगा। क्या निकला क्या निकला क्या निकला? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एलिमेंटल मास्टरी। आई डोंट लाइक दैट। मेरे पास बहुत एलिमेंटल मास्टरी है, मेरे को जरूरत 7 और ये कितना है 14। अरे भाई ड्रीम सॉल्वेड भी। ओके 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 गुड 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 गुड। अच्छा अच्छा लूट, गुड लूट। ड्रीम सॉल्वेड भी मिला, मतलब ओपी। ब्रो मेरा वेपन चेक कर लो, आई एम न्यू प्लेयर। ओके ब्रो, लेट्स गो। चाइल्डी को मारेंगे, चाइल्डी को मारने से पहले जहाँ पे हील कर लेता हूँ। अरे क्रूजर भाई वेलकम टू स्ट्रीम, क्या हाल चाल ब्रदर, कैसे हो? कैसन बा? ठीक बा? एवरीथिंग ओके बा? इथन कार्टर की वीडियो देखी आज मैंने डाली, मस्त गेम है वो। खत्म करूंगा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में, शायद खत्म कर दूंगा मैं। फियर ऑफ समथिंग सो कॉमन। अरे भाई नॉट अ न्यू प्लेयर बट अ फ्लेक्सर एकदम। क्या चंगासी? अरे चंगासी। एज डहा को मार के देखता हूँ क्या मैं मार सकता हूँ क्या। एक सेकंड रुको, मैंने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है ना एज डहा को। मैंने हाइपर बाई के वर्ल्ड में जाके क्लेम किया था, तो आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। लेट्स चेक। आई ऑलरेडी क्लेम दिस थिंग। 0 रिमेनिंग। ओके चाइल्डी को भी शायद मारा था हमने। चाइल्ड को नहीं मारा, चाइल्ड को मारते हैं, रुको चाइल्ड को मारते हैं। वुल्फ को भी मारा था मैंने, क्लेम नहीं किया, क्लेम कर लूंगा।
वुल्फ को मारने के लिए साला मेरा मेरा सबसे डैमेज डीलर है अपना वो शाओ। और इधर एक प्रॉब्लम ये है कि भाई वुल्फ लेता नहीं है एनोम डैमेज, तो मैं क्या करूं बताओ। थंबनेल पे थोड़ा और वर्क करना होगा ब्रो। हाँ अरे न्यू हो भाई, सच्ची में न्यू हो, ओके। हाँ देखी मैंने, अच्छी थी। थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, यस आई गॉट इट, आई गॉट इट। थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, मेरे को पता है। अगर मेरे थंबनेल बहुत ज्यादा एकदम अट्रैक्टिव होते, तुम्हें क्या लगता है इतना धड़ाधड़ कंटेंट डालने के बाद भी मैं क्या 400 पे बैठा होता। बट आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ब्रो। I do not know enough about it. I do not know, okay, you don't have to worry about it. You just tell me your user ID, UID. And I'll give you ज्ञान जो मेरे पास है, 2 लीटर ज्ञान। जो मेरे पास ज्ञान है वो हम तुमको बताएगा। I will guide you। तभी जाके गाइड वाइड को छोड़ो, सबसे पहले जाकर इधर जाके मरो जाएगा इससे। कभी कभी इसको मैं एकदम चीज कर देता हूँ और कभी कभी ये मेरे को एकदम चीज कर देता है, तो इट इज अ फेयर फाइट। 10 days हुए। हाँ वो तो दिख ही जाएगा, अगर तुम्हारा AR लेवल देखूंगा तो मैं। Quite hard to come back. Well then, amuse me। बहुत ज्यादा नॉकबैक नहीं था दूर। अरे अम्मा जी, इसी को हील करता भाई। और रे भाई, ये वाला अटैक करने के बाद ही इसकी माँ किया। पहले इसको हील करो थोड़ा। बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। हेलो, 1 सेकंड रुको भाई, 1 सेकंड रुको। ओके नेवर माइंड। क्या मैं इसको बिना अल्ट के मार सकता हूँ? क्या ना है? ओके भाई, भाई बस हो गया भाई, आज के लिए ये ले। अल्ट 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 अल्ट। तो ये क्या आइटम है? ओके दैट वाज न्यू, मेरे लिए वो नया था भाई। बिना अल्ट के मारा मैंने। अरे सॉरी 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 सॉरी। गेम साउंड, गेम साउंड। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अरे गुलाबी भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या लिखा है? हेलो, अरे हेलो ब्रदर, हेलो हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। सॉरी सॉरी सॉरी, गेम का आवाज नहीं आ रहा था। आई एम रियली सॉरी। अभी आएगा, अभी आएगा। बिना साउंड के खुश रहो। अरे मेरे को आ रहा था, तुम लोग को नहीं आ रहा था। मेरे को ये देखने में बहुत पसंद लगा भाई। आई लव दिस कट सीन। दिस इज वन ऑफ द ओपीएस्ट कट सीन इन द गेम। बाय द वे लॉर्ड सेटन, वेलकम टू द स्ट्रीम। इसका आवाज अभी एको हुआ ना भाई। आई लाइक चाइल्ड बिकॉज ऑफ ये वाला रूप, बाकी कोई टेंशन नहीं है। पहले तो अपना अटैक कर ले सारे, फिर मैं अपना अटैक करूंगा, ठीक है ना भाई? ठीक है। ये काम करता हूँ सर, मैं अपना अटैक कर रहा हूँ सर। इधर ही रुको, जाना नहीं, भाग। टीपी नहीं करना, टीपी नहीं करना, बता रहा हूँ मैं पहले।
थैंक यू फॉर स्टेइंग। हिरन के क्या रूमर चल रहे हैं? ओ सच्ची में? दिस इज रियली गुड कट सीन, बट व्हाई डिड पाइमॉन फॉल? वो बेवकूफ है ना, शी डजंट नो कि उसके पास विंग्स है करके। अरे बाप रे, दिस वन इज गुड बट मेन स्टैट इज नॉट गुड। ऐसे ही होता है भाई, मेन स्टैट का अच्छा देखो, ये कितना अच्छा है, डिफेंस है लेकिन गुड। मेन स्टैट क्या है? एचपी परसेंटेज, ये क्या करूं मैं? ये मेरे पास कितना 17 है और ये कितना है 6। ओके, ये मेरे को शायद जोंगली के लिए यही चाहिए, आई डोंट नो। ये बिलेट भी, और व्हाट व्हाट isn't this the rarest of them all? मेरे को 2 आर्टिफैक्ट, 2 ये, 1 बिलेट और 1 ड्रीम सॉल्वेट, मेरे लिए तो ये बहुत रेयर है भाई। मेरा एकदम 0 लक है, ऐसी चीजें मिलना मेरे लिए मतलब एकदम बहुत अच्छी बात है। अरे किधर है भाई? पुल करोगे क्या आज इस अकाउंट में? मैं पुल किया ऑलरेडी, 2 पुल, तुमको पता नहीं? अरे क्रूजर भाई तुमने मिस कर दिया यार, ऑलरेडी यू मिस्ड इट। वैसे कुछ मिला नहीं, मेरे को मिला मैजिक गाइड और पता नहीं, अनदर रेयर साइट। यस, एक्चुअली वेरी रेयर। 71 बचा है रेजिन, लेकिन देखो 100% 100 भाई, ये देखने में जो मजा है ना, जो खुशी है तो और किधर भी नहीं है। मेरे को इसको भी 100% करना है। दिस 81 ये तीन ही बचा है, बाकी तो मॉन्स्टर 100% हो गया। ये एक मेरे ना चुभता है, पता है, ड्रैगन स्पाइन चुभता है कि भाई 97% है। I'll figure out a way to make this 100% because सारा 100% हो जाएगा और वो 97। I don't like it, I don't like that। लेट्स गो, यहाँ पे चलते हैं बिकॉज यहाँ पे जाके अपने को अभी जाना है शिमेरु में, बिकॉज पूरी दुनिया शिमेरु देख चुकी है और मैंने अब तक अनलॉक नहीं किया, तो मैं अभी करूँगा। आई विल डू इट राइट नाउ। एक बॉस को मारना है, वो है सिग्नोरा, लास्ट सिग्नोरा, क्या नाम है उसका, जो भी है, लेकिन बहुत एनाइंग है वो मतलब शी इज नॉट हार्ड। उसका वो ठंडी गर्मी मेरे को बहुत दिमाग खराब होता है। आई डोंट लाइक दैट। मेरे को ऊपर नहीं जाना है, एक्चुअली नीचे ही जाना है, तो यहाँ से चलते हैं। अरे वो जो चीज देख रहे हो वो ब्लू, मेरे को लगा वो सीली है, सीली। और ये क्या है भाई? मेरे को ये पेटी लग रहा था भाई। इसका मतलब पता है क्या है? आज ज़्यादा ले लिया। आज यू प्लेन 100% करना मुश्किल है। यू चैलेंज मी मॉर्टल, गॉड ऑफ ओलंपस। अरे अब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, मेरे को चैलेंज करता हमको। अरे लोगों के लिए ये मुश्किल था, हमने ये 100% किया दोनों अकाउंट में। तुम क्या बात करते हैं? ये दिस थिंग 100% मुश्किल है। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी, इट रुकीज के लिए होगा, नॉट फॉर मी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि योर रुकी, आई एम जस्ट सेइंग। चलो भाई देख लेते कितना पुल्स है। 3 कुछ भी नहीं है, सॉरी, अभी मैंने वेस्ट किया। बाय बाय ब्रो। अरे इतना जल्दी आके चले भी जा रहे हो? तुमने तुम्हारा यूआईडी में नहीं दिया और बोल रहे चेक करो। कैसे चेक करेंगे भाई? टेन डेज। अरे ये तो हो गया, सबके चैट पढ़ी ना मैंने। आई डोंट वांट टू मिस एनीवन्स चैट, क्योंकि फिर उनको बुरा लगता है। मेरे को तो क्या, मेरे लिए तो आदत हो गई है। जो जोक था गाइस, ये जोक था ना, है ना, जोक था ना। अरे यार जोंगली होता तो ऐसा एक ही मार के ये सब तोड़ लेता। मेरे को है ना बहुत बोरिंग लग रहा है ऐसा तोड़ने में। एंड यस गाइस, वेलकम टू शिमेरु। आई एम से मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ, वेलकम टू शिमेरु फिलिक्स। आ जाओ
पूरी दुनिया ने ये नज़ारा देखा हुआ है और सबसे पहली बार मैं ये कलेक्ट करूँ ना, ये तो मैंने चैज़म में देखा हुआ है। और मैं अभी देख रहा हूँ शिमिरू आने के 4.5 करोड़ साल बाद। कंटिन्यू थ्रू द फॉरेस्ट, आई विल डेफिनेटली। ये भाई फ्लिमिंगो है इधर तो। पकड़ सकता हूँ क्या मैं? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, रुको जरा मेरे को ट्राई करना है। Reduced to just standing around. How absurd. 10, अरे मैंने पकड़ लिया। अरे भाई इतना इजी होता है ये पकड़ना। मैंने आज तक कभी पकड़ा नहीं था, माँ कसम। ठीक है, looks like a four-petal flower will। शाबाश, शुरू करना आर्कॉन क्वेस्ट। यस, अपीयर्स इन शिमिरू। अरे ये कौन पढ़ता कौन है? वो अपने आप अपने को समझ जाता है पढ़ता कौन है। मैंने आज तक कभी ये ऐसा नहीं किया था भाई, किसी पक्षी को पकड़ा नहीं था। मेरे पास जितने भी पक्षी है ना, सारे मैंने वो उधर से लिए है। Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with टीपॉट वाले Lesser Lord बंदे से लिए। Kusanali. कुसुनाली, लॉर्ड कुसुनाली भाई। इज्जत इज्जत, 2 घंटे का आर्कॉन क्वेस्ट है। सही से पढ़ तो लो। नहीं रे भाई, गलती से पढ़ूंगा मैं। ये देखो, अगर सही से पढ़ लिए तो वो फिलिक्स होगा क्या? नहीं, गलती से पढ़ूंगा। And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your brother. Doesn't seem to the same. I know some things never change। हाँ भाई, ये क्या लिखा है तूने? सुबह शुरू करना आर्कॉन क्वेस्ट। ओके, But even so, people call Sumeru the nation of wisdom, you know. ये भी आर्कॉन If we क्वेस्ट ही है can ना? get a chance to meet the god of wisdom, maybe she can give us some useful information. ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया ना। ऑलराइट, साउंड्स लाइक अ प्लान। But Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. अरे भाई मेरे को देखना है वो कुसुनाली कैसी दिखती है करके। Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. हाँ भाई ठीक है भाई, ओके भाई, ओके भाई। ओ ये कौन है? Wait a second. Look! There's someone up ahead. ये वही है क्या? Perfect timing. Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. We are lost adventurers। Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd We'd like to ask for some directions. इतना दूर से उसने सुना क्या? Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? शिमेरू लोकल, मतलब शिमेरू में जो सबके बाल ग्रीन कलर के होने वाले हैं क्या? What's going on here? There's no way she could have missed that. Kanan is probably nothing to Could she be get। ignoring us? Oh, Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. okay, through mist of smoke। Let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. भाई इधर भी ऐसे ही मिलेगा सीली को तय करने के बाद ऐसा नकली टेस्ट। If it's useful, I'll take it. I don't like this already। वो डेंड्रोसी, अरे भाई 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 हमको मिला डेंड्रोसिचल्स, आरा फ्रूट।
पकड़ साले को। नाइस नाइस, मैंने एक फ्रॉक पकड़ा जो अच्छा दिख रहा था। अच्छा कलर का था, गुड कलर, आई लाइक कलर। अरे इसमें कुछ ये होता है ना, हाँ भाई। तो ऊपर कैसे चढ़ते भाई? और ये फ्लावर इतने बड़े क्यों है भाई? शाव से भी बड़ा वो फ्लावर है। ए टी 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 टी, मेरे को टी का ऑप्शन आया था। ओके नेवर माइंड। ओ भाई, अरे ये बोलते हैं, अरे इधर तो एक और फ्लेमिंगो है। ये लोग उड़ते नहीं क्या? अच्छा आप भी उड़ते हैं, ओके। तुम्हें एक ही आर्कन को 2 बार करना होगा। थैंक यू। ये तो भाई लिटरली अपना शाव बंदा स्पाइडर मैन बन गया। स्पाइडर मैन एक मेरी आवे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पैसा कितना होता है भाई? ए भाई 8 पैसा कितना होता है? 40 40 प्रीमोस यहाँ से मिल रहे हैं मेरे को। अगर प्रीमोस देते हैं तो पता चला प्रीमोस ही नहीं देते। प्रीमोस देते हैं ना। अरे बी माय स्पेस बार। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे रॉयल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल ब्रदर? और रेकर मेरे भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। आइए सब लोग मिलके चाय पीते हैं, बिकॉज 10 बज गया है, चाय पीने का टाइम हो गया। अरे बाप रे बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। 40 2 घंटे का क्वेस्ट 2 बार करना है। अरे भाई झुकता नहीं है अपन, झुके ना वो। ये इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस से प्रीमोस कैसे लेना है? इवेंट से करना पड़ेगा ना, मैं बताता हूँ। What are those? I saw them. के बाद सारा वर्ल्ड क्वेस्ट। अरे भाई है ये तो घास ही नहीं है, एकदम नकली लग रहा है ये तो एकदम। फिनिशिंग टच दिया नहीं क्या? अच्छा घास रेंडर नहीं हुआ है, ओके। अरे मेरे को ये देखना था, ये दिखता कैसे है? तो मुंह किधर है? ये साइड है। कुछ वही नहीं समझ आ रहा, ऊपर से सन भी वही साइड है। कुसुनाली हाउ डू यू लुक? मेरे को तो सबसे आकर मतलब मैंने इसको अभी तक अच्छे से देखो, ऊपर चढ़ के देखता हूँ, अच्छे से देखने का ऑप्शन। ये रुक रुक, आई वॉन्ट टू लुक कि यू हाउ डू यू लुक, आई वॉन्ट टू सी। अरे यार सर शाउट आउट प्लीज। अरे रेक्टर भाई शाउट आउट टू यू ब्रदर। ठीक है सबसे सस्ता वाला, क्योंकि अब तक मैं वो लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ कि मेरे को शाउट आउट देने आता हो। हाँ की माँ की आंख, मेरे को देखना ही नहीं उसका मुंह। हट हट फालतूगिरी। ये सिविलियन 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 डेंड्रोग्लियस किधर है? कैसा दिखता? ये डेंड्रोग्लियस दिखा मेरे को भाई। ये भाई रुको रुको रुको, ये कौन है? अरे तो टूटा हुआ है। अरे भाई इसके अंदर से झाड़ निकल। और ओके नेवर माइंड, आई विल चेक दैट लेटर। अरे भाई डेंड्रोग्लियस है ना इधर ऐसा? अरे भाई ऐसा दिखता है ये तो। ओके ओके नॉट बैड। ओ भाई सिविलियन सिविलियन क्या बोलते सर? इसका नाम है फॉरेस्ट रेंजर। सॉरी नाम नहीं, उसका काम है। हाँ जी तो नाली चाटा मारेगी। अरे भाई मारेगा मारेगा, लड़का है क्या वो? इनका नाम भी ऐसा होता है ना कि साला पता नहीं कर पाएंगे अपन।
अचीवमेंट मिलेगा। मैं आई कॉन्ट कलेक्ट दैट ब्रो। एमसी को दंद्रो बनाओ। अरे हाँ ये जल्दी बोला तुमने। किधर है दंद्रो? अरे भाई ये तो अरे भाई ये तो सबसे ओपी चीज होता। इतना चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तभी पे मैं थोड़ा सा चढ़ गया। ये चैज़म का वो फिनिशिंग है नाइस यार। गुड गुड, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। इसके लिए मेरे को अपने चैज़म ये करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, मेन कैरेक्टर को लेना पड़ेगा यहाँ पर। एंड There's still देन a long road ahead. कितना भी लॉन्ग रोड रहने दे भाई, तू बात करना बंद कर दे। हाँ भाई वे पुसुनाली तो दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसी दिखती है। बट आई वुड लाइक टू से कि भाई अब से सबसे ज्यादा अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो अपना जोंगली का है भाई। जोंगली का स्टैचू है लिटरली ऐसा, मतलब एकदम क्या उसे बोलते हैं, स्वैग में बैठा है एकदम, है ना कैसा भाई। दैट इज द ओपीएस्ट वन। The OG gang is done. The OG gang सही है। नोएल के लिए पिटी बना रहा हूँ। नोएल क्या? नोएल नहीं, नीलाओ। ये कौन नया कैरेक्टर है क्या? साल देखो ये अलग ही कैरेक्टर है। हाँ भाई ये आलस ले रही है, रुक जाओ। अब से जो भी आर्कॉन मिलेगा वो सेकेंड या फिर थर्ड आर्कॉन होगा उसके नेशन का। सेकेंड या थर्ड आर्कॉन होगा उसके नेशन का। भाई भाई अरे थैनोस भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। 4 स्टार होगी लगता है। ओके ये हाइड्रा यूजर। ओके इनको पकड़ो को, वो फिर से भाग के आ रहा है। करो को, पिछली बार वो ट्रिगर नहीं होता, इस बार हो जाएगा। इनको पकड़ नहीं सकते। है इंटरनेट को क्या हो रहा है? शायद लोडिंग हो रहा है ना। रिफ्रेश करो भाई, रिफ्रेश करो। जोंगली और वेंटी को छोड़ के बाकी सब नेशन के फर्स्ट आर्कॉन आर डेड। रियली? अरे किसको देख के फेंक रहे हैं? उधर फेंकने का था बेवकूफ। भाई रुको, पोकेमॉन पोकेमॉन रिफ्रेश। यस गाइस प्लीज रिफ्रेश करो। पता नहीं इंटरनेट वाले को क्यों मर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो चालू है। उसको पकड़ 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 सकता है तो पकड़ ले भाई। चाओ नहीं पकड़ सकता भाई, ये कुछ ओवर साइज है। छोड़ो, इनको मारना नहीं है, लेकिन इनको ऐसा ट्रिगर कर देता हूँ भाई। हेलो भाई, तो ये लोग ट्रिगर भी नहीं होते। अरे तो सही है, मेरे को मार। अरे नहीं, अरे ये तो भाई हैं। व्हाट इज दिस? इसका मुंडी किधर है इसका? अच्छा ये उसका मुंडी है। हेलो ब्रो, ये फ्रेंडली भी नहीं है, ये न्यूट्रल है क्या? ये न्यूट्रल मॉब है क्या भाई? ये न्यूट्रल मॉब है क्या? एनिमो आर्कन इज डेड टू। एनिमो आर्कन इज आल्सो डेड। थैनोस इज आल्सो डेड। अरे भाई ये न्यूट्रल मॉब है क्या? बताओ मेरे को। आई डोंट वांट टू फाइंड आउट, तुम लोग बताओ मेरे को। भाई न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर मैं उसको हिट करूंगा तभी वो मेरे को हिट करेगा। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं। किसी को नहीं पता रहेगा तो। ये थोड़ा सा कुछ और, फिर मैं 1 पुल करूंगा। 10 नहीं, 1 पुल। लेट मी जस्ट चेक। नहीं नेगेटिव मॉब है। नेगेटिव मारोगे तो ये भी मारेंगे। हाँ तो मतलब न्यूट्रल है। ओके भाई अपना क्वेस्ट किधर है? न्यूट्रल मॉब है, ये न्यूट्रल मॉब है तो अच्छी बात है भाई। आई लाइक दिस वन। दे आर ऑल्सो, दे लुक क्यूट एज वेल। ये बंदा पूरा एकदम अपनी कोई तो क्या उसे बोलते हैं, पूरा एकदम एक्सरसाइज कर रहा है, इधर से उधर भाग के फिटनेस चैंपियन बनना है इसको। ठीक है ना? ऐसे भी हो सकते हैं। मारो उनको। नहीं रे भाई, उंगली करने वालों में से अपन नहीं है। आई नो आई कैन किल देम, बट वाई? इतना बेचारा फिटनेस में जुड़ा हुआ है, क्यों मार रहे हैं उसको? ये क्या है? ये किसका घर है भाई?
अगर मैं ऐसा एक्सप्लोर करते रहूंगा तो फिर मैं तो आर्कॉन क्वेस्ट तक भी कल पहुंचूंगा बे। 2 घंटे का आर्कॉन क्वेस्ट है। फॉरेस्ट रेंजर रुको, फिर से पीछे चलो। मैंने वो क्यों किया? अरे इधर एक फ्लावर है जिसका नाम है शिमिरू रोज। Definitely have enough for a grand feast this time. मास्टर शेफ। ओ भाई हेलो सर। अरे इसको कुछ मिलता है, कुछ नया आइटम है। हरी सोच नया आइटम है। दिस इज न्यू एंड ये स्पाइस भी न्यू है भाई। क्या मसाला? लास्ट चैट प्लीज। ओके सर। अगर ये किसी के पेट, क्या किसी का पेट है लाइक एनिमी के, तो ये भी अटैक करेंगे। पेट है, अच्छा किसी का पेट है। फिलिक्स सीख लो। क्या सीख लो भाई? क्या सीख लो भाई? टाइगर ढूंढो। टाइगर भी है। ओहायो। अरे भावेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? ये टिगनारी का घर है। ये टिगनारी का घर है सच्ची में? गरम मसाला है। यस हाँ भाई मैं भी वही बोलने वाला था, गरम मसाला है ये तो। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये क्या है? डिलीशियस पीटा पॉकेट। अरे ऐसा लग रहा है वो क्या वो डोरेमोन खाता है, उसका नाम क्या है? डोरा केक। डोरा केक का अंदर वो वेजिटेबल्स डाला हुआ है, मतलब डोरा केक सैंडविच ना। डोरा केक इज स्वीट, ये थोड़ा अलग है ऐसा लगा। और ये क्या है? ओके ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा। ये अच्छा लग रहा है दिखने में। हाँ लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पैसा कितना है? आइए बॉय, पूरे शिमुरू को साला अपने पास इतना पैसा है ना कि पूरा शिमुरू खाना खाएगा पूरे 1 साल तक, वो भी पेट भर के। इसका नाम रखने में ये लोग ने ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया। मैं चाय पीने में मेहनत कर लेता हूँ। Those buffalo type enemies are just like real life dogs. अगर उनके ओनर बैड है तो वो Those memories. अपने लिए भी So dark. थ्रेट है। ओ समझ गया। तो इसका मतलब अगर उनके ओनर है, मतलब अपन भी एक ओन कर सकते हैं ना। ऐसा होना का ऑप्शन होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर मॉब्स, अगर ये गेम के मॉब्स अगर उनको ओन कर सकते हैं तो वी शुड आल्सो हैव दैट ऑप्शन टू डू दैट। अरे भाई इसका नाम तो रखेला है भाई, मेहनत किया है। जिसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते उसको मेहनत कर ले, और जिसका नाम प्रोनाउंस कर सकते उसको मेहनत नहीं किया। जैसे कि अरे आमिर भाई, अरे क्या हाल चाल रहा है भाई साहब, कैसे हो तुम? आजकल मूवी फ्लॉप जा रही है तुम। क्या चल रहा है आज? आमिर भाई देख रहे हो, फॉरेस्ट गम का रीमेक बना है तो तुम्हें फॉरेस्ट वॉचर बनना पड़ा। अरे आई एम रियली सॉरी फॉर यू। ये क्या है? ये पीच है भाई, पहले वाला मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जायतून पीच। अरे भाई जायतून पीच। आफ्टर ऑल इट्स केक। क्या डेकोरेट में एग होता है ना, मुझे वो न्यू शेयर टीपॉट में चाहिए। एग्रीड, मुझे भी उनको पेट करना है यार। यस यानस भाई, अपन दोनों की सोच मिलती है, ठीक है। चार्लिस चेस डिफीट ऑल हिलीचल्स। व्हाई? क्यों मैं डिफीट करूँ? मेरे को नहीं कोई इंटरेस्ट। हिलीचल को मेरे को मारना नहीं है, उनको पेट करके रैन सिमुलेटर बनाना है। भाई मेरा जाओ रिव्यू कर सकते हो, देखते हैं भाई। आ जाओ हम चुस्की लेते। अरे भाई आर्कॉन क्वेस्ट किधर से शुरू होता है? मेरे को वी दबा के देखना पड़ेगा, रुको जरा, जे दबा के। 200 मीटर्स प्रॉबेबली वो पीछे रह गया। अरे चाय तो बहुत मस्त है यार, मस्त अदरक वाली है। मेरे को लगता है और एक मंगाना पड़ेगा।
मजा आ गया। मैं कभी स्ट्रीम पे ज्यादा खाता पीता नहीं क्योंकि आई हैव अ रूल, मैं खाता नहीं पीता हूँ, मतलब एक रूल सेट किया मैंने पिछली बार। अब पहले कभी खाया रहेगा तो हाँ खाया रहेगा, लेकिन एक ना ये होता है ना 82, अरे 82 भाई, 32, 62, 48, 35, 4, देखो बिना देखे 62, 48, 35, 4, ठीक है ठीक है ठीक है। ई, ये भावेश तुम्हारा ये नाम है ऑब्वियसली। हाँ, स्टील कप में कैसे पी लेते हो, मेरे तो मुंह ही जल जाएगा। अरे वो इतना भी गर्म नहीं है, मेरे घर वालों को पता है मैं गरम गरम चाय नहीं पीता एकदम, मतलब है ना ज्यादा एकदम ठंडा भी नहीं एकदम गर्म भी नहीं एकदम। और मेरे को स्टील कप में ही अच्छा लगता है, मेरे को वो वाले कप में ज्यादा गर्म लगता है भाई, अलग है वो। मैं आए आए भाई, अरे क्या यार सर, हम लोग फ्री टू प्ले, तुम हमको ऐसा जला रहे हो यार। मैं नहीं, मेरे को नहीं देखना तुम्हारा अकाउंट भाई। मैं नहीं देखता, मैं भी ऐसे लोगों का अकाउंट नहीं देखता भाई। अरे माँ कसम, अरे रे रे रे, तुम्हारा अकाउंट में देख, शाव में देख के क्या करूं भाई। फ्री टू प्ले हूँ, तू रहने दे, रुको मैं देखा अभी साबित करता हूँ। ओके ओके, मतलब यू आर टेलिंग मी कि तुमको 2 प्राइमोरियल जेड और एक स्काई, तो ये स्काईवर्ड स्पाइन तुमको मिला स्टैंडर्ड बैनर से या फिर वेपन बैनर से। रिव्यू एंड्स हियर। यस, इफ यू हैव a 5-star weapon in your character which I don't have, then I feel very bad and then I don't review your account and I'm just kidding। मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा अकाउंट, देख रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को सीखने को मिल रहा है। देखो कितना मस्त शाव है तुम्हारा। किडो भाई, अरे किडो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल, यू आर बैक। तुम तो एकदम जल्दी आ गए, अच्छी बात है अच्छी बात। पुराना अकाउंट है ये भी, हाँ पुराना अकाउंट है, यस ऑब्वियसली। यार देखो ना कितना था भाई एयर तुम्हारा, किधर दिखता है भाई एयर, बहुत ज्यादा पुराना अकाउंट है, बहुत टाइम लगता है भाई। 55 से आगे पहुंचने को बहुत टाइम लगता है। आई एन सिल्वर, ओके रिव्यू हो रहा है ये फ्लेक्स, पता नहीं स्टैंडर्ड बैनर से मिला दोनों। अरे भाई वेरी गुड। आर्टिफैक्ट देखो, ओह जरा कॉन्स्टलेशन देखो, ओके नेवर माइंड, मेरे को लगा। और टैलेंट देखो भाई, इसको पूरा मैक्स कर दो, मतलब एटलीस्ट 9 तो करो, 999 कर दो, 999 बूम बैम बैओ, मतलब बिना सोचे समझे कर दो, क्योंकि भाई मैंने तो 10 कर दिया है मैं। अरे आई वाज बिल्ड डिफरेंट, ठीक है ना भाई। मिलेनियर ओके, देखो जरा फ्लावर ओके ओके। अरे भाई ओके, कोई एपिक रिएक्शन नहीं, जैसे कि रोज का काम है ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। कितना महीना लगा रे ये एग्जैक्ट आर्टिफैक्ट मिलने को। हाँ थैंक यू भाई। अरे आर्टिफैक्ट देखना, यार से नहीं यूआईडी से देख के समझ जाओ। हाँ भाई वो भी है और वो भी है। आई वॉन्ट स्पीयर कर्स टू। अरे भाई मेरे को भी एक स्पीयर मांगता है, मेरा तो शाउट ऑलमोस्ट बिल्ड है। 6 दिन में इतने अच्छे आर्टिफैक्ट मिल गए तुमको, मजाक कर रहे हो क्या। मेरा कर्स डीलू के। अरे तुम तो रहने दो भाई, नोवा भाई डीलू को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वो डीलू, ठीक है ना। मैं आर्कॉन क्वेस्ट को क्वेस्ट, अरे भाई आर्कॉन क्वेस्ट में फोकस करते हैं,
अरे कुत्ते का भी नाम है भाई, से बात कर सकते हैं क्या? सैप टेक गुड केयर ऑफ डॉग। अरे भाई भाई पेटी मिला मेरे को, व्हाट? अरे शिमरू रोज दिया बे, हट। जितना देर इससे बात किया उससे अच्छा 4 शिमरू रोज कलेक्ट हो जाते। चलो नेवर माइंड। जे दूसरा आर्टिफैक्ट भी अच्छे हैं, देखो देखा ना भाई तुमने क्या बोला? शाव उधर हिलीचल का ऑप्शन आया था, चला क्या? अरे हितेश भाई वेलकम टू सी। मैं भी करूँ क्या अपना टू फिश आउट फ्लेक्स? नहीं रे मत करो यार, रहने दो भाई, अरे भाई फ्लेक्स क्यों कर रहे हो यार तुम? मतलब क्यों क्यों वाई डू यू वांट टू फ्लेक्स? जस्ट प्ले द गेम ब्रो। स्पाइडरमैन स्पाइडर ओए ये, अरे यार, अरे इसकी माँ का धगिना का किधर से मिला ये डेंड्रोक्लिस मेरे को? अरे यार shit यार। क्या नाम? डेंड्रो की स्पेलिंग है DNDRO, डेंड्रो। क्यूलिस की स्पेलिंग क्या है? ULUS, डेंड्रोक्लिस, राइट? मेरे को समझ में डेंड्रोक्लिस कलेक्टेड भाई, कलेक्टेड। साला जब भी मैं ढूंढने को जाऊंगा ना और मेरे को फिर एक नहीं मिलेगा, मैं सोचूंगा भाई ये एक किधर से कलेक्ट किया, तो इसलिए ऑलरेडी मेरे को मार्क करके रखना है। आई एम दैट टाइप ऑफ गाय जो इंटरैक्टिव मैच से सबको झाड़ू मार लेता है। इसका कपड़ा तो बहुत सही है रे, इसकी तलवार तो भाई एकदम, और माँ कसम। Is it really all right to just go in like this? अरे ऐसी तलवार है उसकी, ये इमोशनल डैमेज को भी थप्पड़ उसके लास्ट में। उफ, अरे भाई आई एम सिल्वर नाउ इन वैलोरेंट। मेरे को तुमको एक ही बात बोलनी है हीरो भाई, कैसे कर लेते हो तुम? कैसे कर लेते हो ना? आई एम नॉट आस्किंग कि तुम और कैसे मतलब पहुंच जाते हो वैलोरेंट, तो वो गेम खेल कैसे लेते हो मैं वो पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ। फ्रॉग फ्रॉग पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फॉरेस्ट फ्रॉग। लेकिन इन्वेंटरी में जाने के बाद बस फ्रॉग बन जाता है वो। ओ यहाँ पे जाना है मेरे को। इतना ब्यूटीफुल है रे, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। जान दो क्यूलिस मेरा भी कलेक्ट हो गया। आप वही तो यार, गलती से थोड़ा स्पाइडरमैन क्या बन गया कलेक्ट। कोई सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहा है, रहने दो भाई। देखो अपना है ना, अपना मजदूरी शुरू है, तो आई विल गेट वेयर आई वांट टू गेट, ठीक है? यू डोंट, नोबडी हैज टू वरी अबाउट एनीथिंग। तुम्हारा भाई जाएगा, पहुंचेगा, एक मुकाम तक पहुंचेगा। अभी शिमेरू में एंट्री होके अरे भाई अभी जस्ट मैं शिमेरू में एंट्री किया। लेजेंड फ्लेक्स इन गेंशिन, कीडो फ्लेक्स इन वैलो। अरे यार सही में वो गेम एक टाइम बाद पसंद नहीं आता भाई, सच्ची भी सच्ची पसंद की बात नहीं है। इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स देन एक्चुअली इट्स ओके। लेकिन उसका जो कम्युनिटी है ना इतना गाली वाली, आई डोंट लाइक इट भाई, बहुत गाली देते हैं, बहुत मतलब इतना नेगेटिविटी उतना इतना ज्यादा है ना उस, कैसे बताऊं मैं तुमको। श्योर लेट्स गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to वो point us वीड in का the right अगरबत्ती जला रही है। direction. That's all. मैं आज तेंदुराक्युलस कर लिए सारे कलेक्ट। अरे भाई हितेश भाई तुम स्पीड रन कर देगा, यू चैलेंज मेरे को चैलेंज कर रहे हो स्पीड रन में भाई? यू डोंट नो मी सच्ची। अभी आके देख रहे हो कि भाई फिलिक्स ने तो अभी भी शुरू किया है। अगर मैं बैठ गया ना इधर, छोड़ो छोड़ो। वेरी गुड हितेश भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। What a lovely Very good. smell. It's coming from that sensor over there. एवरीथिंग आई एम सेइंग भाई, जो भी नया बंदा है I'm just joking, हाँ मजाक कर रहा है, जो कोई है नहीं भाई, ठीक है ना? ये मेरा नेचर है, मैं मजाक करता हूँ। हाँ बताना पड़ेगा ना, कोई नया आएगा समझ रहे हो ना, बैड इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए पहले, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसा यस यू कैन कॉल इट भाई, इट इज फ्रीडम, यू कैन यू कैन से एनीथिंग यू वांट। सेकंड लास्ट चैट प्लीज ब्रो, कौन सा वाला सेकंड लास्ट?
यार सही में वो गेम एक इसके बाद वाला, वो गेम टीम सपोर्ट में है जो कि अपने को कभी क्या मिलने वाला नहीं है। हाँ वो भी है। चाचा सुनो, हार कॉन्क्वेस्ट और वो राना वाला वर्ल्ड क्वेस्ट मैं कल सुबह हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। ओके पता नहीं क्या होगा। हाँ मेरे तो सारे स्टैचू भी नहीं अनलॉक नहीं किए हैं। ठीक है अरे कीड़ो भाई तुम तीर खुद के ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलोरेंट एज अ गेम, नॉट यू एज अ पर्सन। देयर इज अ डिफरेंस। थैनोस इज एक्चुअली आदर्श। क्यों भाई ऐसा क्यों लगता है तुमको? अरे बहुत लंबा है यार। सही है बहुत सही You don't look too good. सही में बट वर्थ इट है दोनों का एंडिंग। ओके ओके What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. इसके सर के ऊपर हाथ रखा है मतलब है ना, इसको है ना खैनरिया की याद आ रही है क्या? Gotta get out of here. What? क्योंकि पिछली बार भी सर पे हाथ रखा था या फिर ऐसा कुछ रखा था तो उसको वो फ्लावर दिखा था। आई थिंक आई एम गोना पास आउट। व्हाट द हेल? और सच में पास आउट हो गई तो मजा कर रहा था मैं। चैट पढ़ क्या? चैट पढ़ के लगा चैट पढ़ के लगा नहीं ठीक है चैट पढ़ के लगा। ओके पहले भाई BBTW इसका मतलब बाय द वे होता है ना? क्या होता है भाई? कोड में जाओ ना भाई, ये प्यारा म्यूजिक है उधर का, सुनो अच्छे से। ओके अल्लाह टाइम कितने सही लगता है। ओ जिस दिन गिव अवे था उस दिन आदर्श था लेकिन थैनोस नहीं। अरे नो भाई तुम कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना बंद करो। दे बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट पर्सन, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग ब्रो। What's happening? ठीक है ना? ओके ओके मम्मी फाइंड द वॉइस। वाह ये तो नंबर है, ये तो कितना। अरे मैं तो स्प्रिंट भी नहीं कर सकता। व्हाट द हेल इज दिस? इतना मस्त है रे भाई ये। इसको इधर चल के ना मेरे को एल्डन रिंग की याद आ गई। थैनोस भी थैन होगा। वही ओके नेवर माइंड। एल्डन रिंग में ऐसा एपिक एडवेंचर नहीं होता भाई, इधर से उधर ये पटती नहीं आता। किसी ने बड़े ट्रेनर देखा है ये वहाँ भी शायद। इतना ज्यादा ब्राइट है रे। नहीं यार मैं लास्ट 10 मिनट में आया था स्ट्रीम के। हाँ भाई आई नो नहीं उसको लग रहा है कि ये थैनोस, ये जो आदर्श है वो थैनोस बन के आया है करके, मतलब अकाउंट चेंज करके आया है। तो आई वॉज करेक्टिंग हिम कि भाई ऐसा नहीं है। वर्ल्ड फॉरगेट मी व्हाट? मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर तुम लोग में से किसी को पता होगा तो मेरे को बताना, ठीक है ना? जब भी अपना वो खत्म हुआ था, क्वेस्ट खत्म हुआ था। You sure it's not? Yes, you can relax. क्वेस्ट का Believe me, नाम है, Master is extremely रुको knowledgeable. जरा। If he says that she's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. अरे अपनी ये लड़की जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, कोली व्हाट एवर इट इज। Oh, are you awake now? जब तक गेम मेरे को नहीं बताएगा मैं गलत नाम बोलते रहूंगा। Oh, thank goodness, Traveler, you're finally awake! इट वाज बर्निंग अगेन। वो अलग पेड़ था थैनोस भाई, तो नहीं था शायद। ओह क्या फर्क पड़ता है अगर आदर्श ही थैनोस है? अरे भाई
आप उसके वीड अगरबत्ती स्मेल करके सो गए थे। अरे भाई सच्ची। हाँ मेरे को ये पूछना था, अब जब भी अपन ये गोल्डन एप्पल वाला इवेंट कर रहे थे, सबसे लास्ट में किसी का तो आवाज था पता है, मतलब सब इवेंट खत्म होने के बाद वो है ना फिशिंग करने जाती है ना क्रैब्स पकड़ने को अपनी ट्रैवलर, तो लास्ट में किसी का तो आवाज था, वो बोलती है कि मैं दूर से तुम लोग को देख रही हूँ करके। तो वो हु द हेल इज दैट पर्सन? किसी को पता है? कोई कोई मांगा वांगा वाला बंदा तो मेरे को बताओ। हाय शिमिरू में फुल नशे है। अरे भाई Well, we're at... शिमिरू द लैंड ऑफ Good वीड question. Where are we? Haima was in such a panic when you passed And, out that she even forgot to ask what place this is. अलादीन। अरे भाई लैंड ऑफ वीड एंड अलादीन एंड जीनी एंड चिराग। कोली इज एम्बर्स फ्रेंड हेंस शी इज यूजलेस टू। अरे भाई पता है बट बताने नहीं वाला, आप खुद एक्सप्लोर करो। हाँ को सुना ली ही है वो दंद्रो और कौन। ओके This is Gandharvaville. Okay, It was okay. originally built by Thanos bhai. scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. वेरी गुड आंसर। Now it's mainly used by the I really forest appreciate rangers as a your base answer. of operations. इट्स ऑब्वियस वहाँ दंद्रो सिंबल भी दिखा था। नहीं मैं इतना घूर घूर के नहीं देखा था भाई। My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My Kale. master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. वो जो लड़की है ना उधर वो वीड बेच रही थी और तेरा डायलॉग खत्म हो गया तब भी तू कैसे बोल रही है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट, सो यू वुड हैव टू कम पिक मी अप अगेन एंड अगेन एवरी टाइम फॉर द 1000 टाइम, बिकॉज मैं बार बार वो नशा करने वाला हूँ। ठीक है ना कोली कोली कॉली? देखो मैं अभी भी नशे में हूँ, मेरे को तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। Oh, no, no thanks are necessary. ओके I didn't do anything really. उसने भी बोला By the नो way, थैंक्स। how are you feeling now? Any discomfort? The taste in my mouth, it's so bitter because this is the first time I ever tried weed. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. Okay, ऐसा है He क्या? gave you some while you were unconscious. I thought it was weed, but thank you for explaining it to me. Before I forget, Master mentioned you should क्योंकि take वो more limited medicine event once you था। wake up. Obviously वो really क्या और full character को free में क्यों देंगे जिसका एम्बर को दिया, जैसे एम्बर को दिया। वो Who is your master? Tignari? Whoops! अरे आग बंद करके काम करती है क्या? अरे टिग्नारी है। Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. अच्छा तो अपने पहले आइटम से बात कर ले फिर, ठीक है हम लोग वेट करते हैं। Sorry, नो बट डजंट Master. मैटर। अरे रुद्रा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल ब्रदर? वेलकम वेलकम। दिस इज अ न्यू नेम आई स्पॉटेड। वेलकम भाई। बाबू नए लोग को बोलता नहीं है और जो जूने लोग जूने लोग को बोलता नहीं है, वो उल्टा बोल दिया। अगर स्टार्ट से ही पावरफुल कैरेक्टर दे दिए तो कोई बैनर में क्यों विश करेगा? हाँ मैं समझ गया व्हाट वाज योर पॉइंट थानोस भाई, मैं समझ गया। टिग्नारी ड्यूड व्हाट द फक इज टिग्नारी? मेरे को बुलाना है? देख मैंने टिग्नारी बोला ठीक है, या टिनारी व्हाट एवर द हेल इट इज, लेकिन तेरे को समझ गया ना मैं कौन से बंदे की बात कर रहा हूं? कन्वर्सेशन हो गया ना? इतना ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है अंकित भाई? Now, Actually the useful है। guide to Avidya Forest's edible fungi is Exploration clearly में posted काफी on our काम। bulletin board. But if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more सिर्फ visible. नारी बात कर दो। Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. और I'll स्ट्रिंग be sure to give him a good talking to. अरे वो उसके आइटम नहीं है, मेरे को लगा वो भी बीमार है।
लाइक उसके मुंह पे ही लिखा है वो बीमार है करके. व्हाट द हेल. वो इतनी सैड क्यों है? Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance सिर्फ before नारी his बात eyes, खत्म. then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. इसके पीछे ये क्या आइटम है? So, how are you doing? Feeling better? Yes, much better. Thank you very much. Oh, this is my master. अरे इसको पूछ Forest भी है. Watcher Tainari. ये तुम्हारे He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. ये तुम्हारे मास्टर का जो पूछ है वो क्या अपने आप ग्रो हो गया? I ऐसा already क्या? informed Paimon Spooch about का the राज क्या reason है? you fell Billie Eilish of unconscious Genshin. earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for अरे gambler Sumeru मतलब scholars of रैकर मेरे भाई certain welcome to the darshans to stream. dedicate चल themselves to चल. training and Hello, I'm meditation new. in isolated areas, Can you particularly give me the my ID? I nearby can't review your ID, forests. bro. While meditating, they use a certain Because I know incense you're known not as new. spirit borneol to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. ये सब वर्ड्स मत बोला करो क्योंकि मैं 2 सेकंड बाद वो भूल जाऊंगा. In hopes of Conversation ही asking मैं directions, याद नहीं you रख two रहा. followed a scholar named Hypatia into her अगर cave. आगे देखो The मस्त नशे में incense you रहता smelled है सब inside was the इधर. ओके. spirit borneol I just Yeah. mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Yes. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any ये गोरा का out-of-body दूर का रिश्तेदार है. experiences? Or did you see anything while unconscious? Okay. I saw a very massive weed tree, and it was so huge that अब ये पूरा ड्रीम हुआ ही नहीं खत्म. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Okay. अरे ऋषिकेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या तुमने अपना नाम छोटा कर दिया? ऋषिकेश से ऋषिकेश गेमिंग से ऋषिकेश कर दिया. Huh? I see. Why? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Few Amir. days. Now get a move on and be sure to They do can as have I've my said. room. इतने जल्दी फ्रेंडली नहीं होना. I'll bunk with Amir. अरे Amir. Oh, okay. फिर ठीक है. Yes, Master Tainari. Tainari. Okay. Tainari. Okay. I will not forget that Tainari. का नाम Tainari है. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? No. Then you don't have to listen to it. Sure. Let me fill you अरे in. pouch. I originally planned to send you on your way Why? once you finished your बोली medicine. भी पूछ रही है. However, it appears now that you should stay a while ऋषिकेश longer हिंदी in गेमिंग. Gandharvaville हाँ. for further observation while you recuperate. अच्छे अंकित भाई ने सबका नाम लिख के रखा हुआ है. Further observation? पर भी नहीं रुके तो दृश्य मेरे से. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. अच्छा मतलब उधर भी कोविड फैल रहा है इसलिए तू मेरे को इधर रुका रहा है 2 दिन के लिए. I understand it now. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. Okay. If you're skeptical, have a whiff of this. You're giving me once. You're giving me एक और weed. Oh, One more weed. are you okay? देखो वीड का वास लिया नहीं कि इसका हो गया कहाँ. यूट्यूबर नहीं हूँ अब. नेम चेंज करके चैनल हाइड. शायद अब सर्च करने पे ना आए चैनल. ओ तुम यूट्यूबर थे पहले कि ऐसी वीडियो बनाते थे भाई. देखो वो भी बोल रही है अगरबत्ती स्मेल करके आप सो जाओ. अरे भाई सच्ची में टिग्नारी भी भाई ड्रग लॉर्ड है. You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? Yes, you are a drug lord. I remember. I see now. That was just a bait. You are the actual criminal here, right? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. Somewhere else. Smoke weed every day. I got it. Coco dead, video dead. Yes.
Ooh, ganj. The rainforest is home to many fierce Don't animals get and carried away, hazardous guys. areas. अपने को 2 If घंटे something का were to गेम खेलना happen है. to you again, गांजा I'm afraid you गांजा might मेरे को not be खत्म so करना था भाई. lucky. वो डायलॉग खत्म करना था. No 60 FPS गेम प्ले. हाँ क्या गांजा तस्कर है क्या? बीजेएमआई मॉन्टेज बनाता था 60. ओके हाँ यस यस एग्जैक्टली भाई. For now, हितेश भाई I समझ गए. suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. यू At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? 2 दिन तक अगर मैं इधर रुकूंगा तो साला प्रीमोस की तरह बाप जमा करेगा. ड्रग लॉर्ड इसका नाम से आज भाई इसका नाम थोड़ा सा किनारी, लेकिन पब्लिक को तकलीफ हो रही है तो अपन इसको ड्रग लॉर्ड बुला रहा है. अभी किसको तकलीफ है बताओ? अरे ये बनाना ट्री नहीं है, बनाना लीफ नहीं है. हेलो ये बनाना लीफ है ना? Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. फायर अप वीड नारी. नॉट नारी no, he is the boy. he is not a girl. Maybe गर्ल है ना, बॉय है ना. हेलो साला इसमें पता नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है. बता रहा हूँ माँ कसम, लेकिन मेरे को लगा ये लड़का है करके. Seriously? गान We just ड्रग लॉर्ड. arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Yes, exactly. The problems we faced in Inazuma, but the Inazuma problems were more big problems. These are like continue करो. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as चलिए को possible, भी but मैंने कहा अभी भी you कुछ really don't लोग look too good. It'd लड़की probably be समझते best to हैं. let you recover first. शिंचो को अच्छा शिंचो को अभी भी कुछ लोग लड़की समझते हैं. हाँ. Hey, are you even listening to Paimon? Nobody is Paimon listening over to here worrying about you, you know. Paimon. You should know that it's been like 2 or 3 years and nobody is listening to you. So you should actually stay quiet. That would be a very good thing. What's weird? You mean how you're feeling now? Yeah, my body feels a very little weird, but what I mean is, I don't think what I saw were okay. ऊपर वाले चूज करते हैं क्योंकि You mean the vision of tree roots and red hallucination. skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? okay the way I don't know. I'm not sure. I'm too excited for Shneznaya. अरे मैं I am also too excited for Shneznaya. Well, considering how unique you are, सोचो तब तक मैं I किधर trust your रहूंगा. judgment here. सोचो Why didn't you say anything about it to Tainari? मेरे को पता नहीं मैं किधर रहूंगा. If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? If I'm not streaming Shneznaya in a couple of years, then समझ लो कि इधर मैंने ना ये कर दिया, क्या उसे बोलते, क्विट कर दिया या फिर पता नहीं. एक ही ऑप्शन है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन नहीं. आई डोंट थिंक दिस इज द केस. Huh? You mean that Tainari बाय द वे already आर्कॉन knows क्वेस्ट that what you के saw लास्ट weren't में hallucinations? कैथरीन वाली थियरी कंफर्म हो If गई. that's the case, सोचो try to कितने hide 5 that स्टार from होगा. us? अरे भाई मेरे को है ना वो पता है, कभी ट्रेलर आया था, तुमको पता रहेगा कि नहीं, तुमको सबको पता रहेगा ऑब्वियसली. वो सिग्नोरा के सब लोग ने क्या ग्रेव पे थे, उसमें जो सबसे बैडएस आइस कैरेक्टर था ना, एक था आइस कैरेक्टर, इतना बैडएस था ना, मतलब जो नहीं क्या सबको बता रहा था, जो चेस बोर्ड कंट्रोल कर रहा था. अरे भाई आई वुड लव टू फाइट हिम इवन दो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कोई वर्ल्ड बॉस है या फिर कुछ है भाई, उसको मारने में भाई मजा आएगा भाई. लेकिन मुझे लगता नहीं वर्ल्ड बॉस होगा करके, वो तो एक कैरेक्टर है. उसको ना प्लेएबल कैरेक्टर बनाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ओपी है. और कितने कैरेक्टर फ्यूचर में आने वाले भाई, सोच के ये ना भाई साहब, तुम्हें पता है जितने ज्यादा कैरेक्टर आएंगे ना उतना ही रेट्स कम हो जाएगा ये वाले कैरेक्टर का बैनर के ऊपर आने को. समझ रहे हो, समझ रहे हो? जैसे कि देखो अभी आया तो कभी आया था, ठीक है, अभी रिसेंटली आया था. वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं. तो ये इसका आर्कॉन भी आना बाकी है. तो भाई समझ रहे हो कैथरीन रोबोट है, मेरे को डे 1 से पता है. ओ सिग्नोरा न्यू कॉफिन स्किन काउंटर के पास खड़े रहे.
एरर रिबूट ऐसा डायलॉग बोलती है कैथरीन। हाँ हाँ, वो तो पता नहीं एरर रिबूट का, लेकिन सीन पता है क्या है? मेरे को एक रघुवीर भाई ने फोटो भेजा था जिसमें कैथरीन के पीछे इधर एक है ना की होल है, मतलब उसको चाबी से कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली वी नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। Oh, अरे Paimon अंकित gets it भाई now. अभी That explains why you were भैया ने so कंफर्म quiet कर दिया earlier. ना कि वो शनेजना या क्या पपेटियर फटवी की पपेट है। शनेजना या पपेटियर फटवी की पपेट है। Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. कैथरीन का राज खुल गया। हाँ भाई But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? let's start by having a chat with Cole. Good idea. Kali's pretty friendly. We can Kali. ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. ओके मतलब हर आर्कॉन क्वेस्ट में सबसे पहले अपन जाके आर्कॉन के बारे में पूछेंगे। Rise and shine! Come on, it's time जैसे to go कि find Kali. जैसे कि फायर वाला आर्कॉन इसके बाद आएगा ना। फायर वाला आर्कॉन कितना ओपी रहेगा रे, कैसा कैसा All दिखेगा? right, next let's see your right hand. जस्ट इवन थिंकिंग ऑफ इट Yes, भाई। not bad. अभी क्या क्या आना बाकी है? फायर, आइस, वाटर। फायर, आइस और वाटर। अरे वाटर, अरे पानी वाले एरिया में कितना बोट यूज करना पड़ेगा भाई। हेलो But please remember that you still need to पता be है। careful. Understand? फायर नहीं, और कौन सा नाम है भूल गया मैं। ओह Yes, I will. नया ससी By the way, डॉग Master. कैथरीन। Look, Kale, today's Kale. patrol will be a long one, ओके so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter. Well, you understand. एनकाउंटर व्हाट? But I have a vision too. Am I useless to everyone now? अरे रे रे तो तरस आ रहा है मेरे को तो। Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yes. Is there something we can help with? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Okay. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. Okay. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Okay. Tenari, we're ready to head out. किनारी सीधा नाम ले लिया भाई, इज्जत ही नहीं है भाई ये 5 स्टार की तो। Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. आज पढ़ो पिछला वाला पढ़ा था भाई। अगर वो उसकी ट्रेनर में थी एक फटवी जो नोटिस है क्या ट्रेलर में थी। हाँ मेरे को पता है वो पपेटियर ना, समझ गया मैं, समझ आई गॉट इट जब तुमने पहली बार पपेटियर वाला बोला था। Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty किसने बोला था diverse. पपेटियर के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वो तुमने बोला था। They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest वो ट्रेलर facilities, तो भाई सबसे होती था ensuring यार। fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. कितना मस्त ट्रेलर था भाई वो, कितना मस्त ट्रेलर, मतलब सबको ऐसा दिखा दिया कि भाई लिटरली ये लो भाई, ये लो इतने सारे कैरेक्टर है, बनाओ थियरी चलो। दे दो टास्क दे दिया भाई अपने को। As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. कारमूज भाग गया नोसेस लेके।
हाँ Paimon, traveler, this way. You can इसमें leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. anything unusual मतलब what do you mean by that? Would you please be exact? सार्कमुश Nothing wrong with ये these क्या? two lamps. Let's move to the next ones. भाई इनका मुंडी उधर होना चाहिए था ना ये तो याक जैसे दिखते हैं याक and it's confirmed that shogun के noses knight है हाँ? इसके ऊपर बैग ये लगेज जैसा यूज होता है भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये ओके Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. ये लैंप है ओ अरे हाँ Everything's ready. Let's go. अरे उसके पास तो वो है बूमरैंग है नेवर माइंड लेट्स गो शिंचो For justice. मैं लैम्प वो फ्रूट है वो लैम्प बोला भाई उसने अभी तुमने सुना नहीं क्या दिस लैम्प इज गेटिंग No problems with this lamp. Good. नो प्रॉब्लम विद दिस लैम्प देखा लैम्प है वो फ्रूट है बाय No, my sword! लैम्प है मैं बोलता हूँ मेरे को गेम ने बोला वो लैम्प है करके The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. ये लैम्प है मैंने कब कहा लैम्प है It's pretty high up Okay. there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. No, don't worry, I'm a terrific climber. Oh? I guess I'll leave it up to you then. Okay. I'll fly up with you and, by the way, If Paimon can that fly up with depends. me, Are you huh? तो जाके तू खुद क्लीन करके आ पाइमोन हम दोनों बातें Is that करते the हैं former Dendro Archon? अरे मैं स्किप कर दिया व्हाट द हेल Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. ओके To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. शी डिसअपीयर्ड मतलब अब तक फिक्स किया नहीं वो लोग ने कि मारा है कि नहीं पता नहीं ये लोग का जब भी मन रहेगा तो ये डाल देंगे आज चाइल्ड सिग्नोरा मारेंगे चाइल्ड सिग्नोरा मारेंगे चाइल्ड तो मैंने मार दिया सिग्नोरा को मारना है घोड़ा चेस का नाइट हो According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sirastana. Uh-huh. फिर मैं आपको कौन सा आर्मेंजर पसंद है मेरे को तो भाई सब इंट्रोड्यूस हुए क्या गेम के अंदर सब मजा आएगा ना वो सारे 12 के 12 हो गए थे ना लेकिन उनका नाम नहीं बताया ना सबका मेरे को तो भाई वो जो चेस खेल रहा था ना वो बंदा अरे सोनी क्या ऐसा सब अरे भाई सबसे हार्ड लग रहा था वो बहुत मस्त स्टोरी क्वेस्ट है क्वेस्ट एंड होने के बाद सैड लग के इतना ज़्यादा कि क्यों एंड हो गया अरे इतने जल्दी क्यों एंड हो गया ओ ओके आर्कॉन वार कर रहे देखे नहीं क्या फर्स्ट आर्वेंजर का चेस मूव वो मैंने ये देखा था ना क्या उसे बोलते वो ट्रेलर देखा था उसका नाम नहीं पता मेरे को क्या है वो बंदे को Well, and then
too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... What? maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. इतने जल्दी? अरे भाई बच्ची अभी तो अपने को बहुत दिन बाकी है भाई दोस्ती बनाने, इतने जल्दी तुम? Anyway, you two know Amber, right? हाँ. Wait, Amber? You mean... Outrider Amber. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. Really? Amber ने तेरे को हेल्प किया? तो समझ गया भाई तुम्हारा ट्रेनर कौन है? There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. घोड़े से उसका कौन मारा था? It means घोड़ा. Equals Shogun and pawn equals Sumeru. Oh. Okay, ए भाई थियरी छोड़ो भाई. If you ask me, Chronology she's a समझो. prime example of a true outrider. She's the first person Good, anyone Argon coming to Quest, very Mondstadt will nice, meet. especially the You Act can't 2. help but be enthralled by her charm and enthusiasm. Okay, thank you भाई, causing welcome you to to stream. fall in love with the चल lands चल. of Mondstadt and... कैसे हो? सॉरी प्रथा पहले खत्म करो. हाँ अभी बताओ क्या हाल चाल? sorry. I've never seen this side of you. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. Yes. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon Amber and suddenly Lord is feel a wrong. lot closer to you. So, एम्बर की भाई लिटरली कोई now बात that नहीं we've करता. met Amber, इधर ये पहली बार बात कर रही है एम्बर की. well, एम्बर after की I साला returned to मॉन्स्टर वाले खुद Sumeru, बात नहीं करते. Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. मैंने तो एक भी बार देखा नहीं है जीन के मुंह से एम्बर का नाम सुनते हुए. तो होगा बट मैंने इतना ज़्यादा कभी नोटिस नहीं किया भाई. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. Amber is the only one who genuinely cared to find our brother. Oh. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Okay. So that's how you knew. Yep. So please know that you two have my complete trust. Really, I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. सरस्ताना, अरे भाई ये तो लिटरली हिंदू नाम है भाई सब. मतलब इंडिया का एंट्री हो गई लगता. Oh, I'm happy that was helpful. आगे सब There is आप one thing I want to अपना ask, नेशन का प्रॉब्लम Why दे do you two want to know about the देते Ginger हैं. Archon? Yep. There is no one like Amber, no one useless. So that's why you're than- here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Paimon's right, we are friends. Paimon's right, we are friends, and Paimon is a fast food. All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. ठीक है, forest canopy क्या है? What is that? What is that? मेरे को स्टैचू क्लीन करने बोला है. क्या स्टैचू किधर है? ओ इधर. जुपैक. ओ इधर मोन. ये चीज बहुत अच्छी है भाई.
at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Oh, हाँ. Do you think she's supposed कितना to be close look greater मिला Lord भाई, एक number. Mukadevata or lesser Lord Kusanali? Maybe greater lord Kusunali, The lesser name lord. does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Okay. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Top part of forest equals forest, gonna be leaves of trees. Okay. Paman and you mean okay. Okay, that's Good what work. That's one clean statue. Let's Meet head up. down and meet up with Kale. Meet up with Kale. Kale, you can wait, but I want to pick up this flower because you never know किसको देना पड़े. समझ रहे हो? अरे यहाँ पे तो वायु है. नहीं नहीं कल्पलता लोटस व्हाट 2 लोटस के लिए मैं इतनी मगजमारी क्यों कर रहा हूँ इधर से नीचे गिरा तो ऊपर आने में इतना बोरिंग लग रहा है ना मेरे को Let's go, Kali. किधर है? यहाँ पर है. Kale, we're back. तो लिटरली उधर बैठी हुई थी और शाम भी हो गई. What? Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. इतनी जल्दी? अरे भाई इसका काम फटाफट वाला है. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Paimons, Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. okay. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. साला रियल लाइफ में टेस्ट कर पाते तो बता देते. Whoops! ये भी गिरा दिया. No, you dropped it on the ground. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. हर चीज गिराती है भाई ये बंदी. Paimon nearly had a heart attack there. Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. Okay. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. तो क्या अभी चुगली करना शुरू? Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but she's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. Okay. I've heard the veteran rangers फिर say आवाज that इसका Master नाम is from सुन an के ancient and पता नहीं mysterious क्यों race that is known for their cunning wit and reclusive nature. कचौरी की याद आती है. अच्छा कचौरी की याद आ रही है. कचौरी तो भाई तुम क्या है तू क्या यार मेरे को याद दिला दिया यार तुमने. Oh, by the way, you've heard of the academia, right? कचौरी कितना Well, ओपी है. there's a group called,
Lou something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the academia have written him many times, Okay. inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Oh, Shimeru City is to Shimeru City, nahi, Shimeru City. That doesn't sound like something Lena would say. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. फिर अब कचौरी खाने का मन कर रहा है. Exactly. Master could obviously have a और bright अभी future in 11 बज गया है. अभी academia, तो दुकान भी and खुला we नहीं होगा. insist on sticking to the path of a forest watcher. और साला जोमेटो Every day he helps the locals of the और forest स्विगी वाले and passes on his डबल extensive knowledge to trainees like me. टैक्सेस लेते हैं. I don't like that. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. What did you do? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But Okay. it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why? Is she going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali's starting to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial wrath! No! Don't touch me! Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. क्या चल रहा है भाई ये? Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. ओ भाई. No spoilers. बाद में explain. Okay. अरे भाई ये नंबर यार. Great. Ah, Traveler, you've returned. Oh yes, I did. Yep, we're back. Have you Have you seen seen Kale Kale? by any chance? No. Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Okay. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Wait until ओ भाई ये कितना कौन वेट करेगा? बेवकूफ है क्या? बेवकूफ नहीं है हम जाएंगे ऐसे सीधा बजाएंगे 8. टुमारो के 8 मतलब क्या? सुबह के 8 क्या? एक्यूरेट. The damned will see. Paimon was thinking Further all night observation. about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. ओ भाई इधर से सीधा उधर जा सकते हैं भाई. ये तो सही है यार. के लोग Ah, it's उतने you भी two. सेम. I was just about to go look for you. Nice chat. Oh. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well.
Okay. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No, no need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Okay. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation Same elsewhere. nahi dikhte. Kale Oh. just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Follow Tainari. Okay. इधर है वो बंदा ये उसको पकड़ 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 साले को All right, let's continue our conversation here, shall we? Okay. To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Okay. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Yeah. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Okay. Elazar? ये किसका पुत्र का नाम है भाई? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Okay. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. Okay. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. So is there any cure With for it? appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. Okay. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. Oh. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. The Doctor. अरे भाई हार्बिंजर का एक नाम आ गया चलो भाई ये कौन I है have ये no कौन सा idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. Okay. However, Kale's days with the काला Fatui जादू were करता है वो. anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Okay. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday.
She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. Okay, okay. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Yeah. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real इतना मस्त नाम है यार, friendships. द डॉक्टर. I trust that you two will never let my trainee या experience उसका such वो नकली emotional नाम pain है, again. असली नाम कुछ और है. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. How Kale's condition? Well, it's not too serious How's at this Kale? point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. Okay. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Kale! Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical अरे exercise हिमांशु भाई, is welcome to the always necessary, I'm afraid the हेलो long ब्रदर, distance कैसे हो? अरे patrols मैं are a बहुत little सही. too हाउ आर much यू for her ब्रदर? now. और मास्टर ऑफ गेम्स, वेलकम टू द स्ट्रीम. हमारा स्वागत नहीं करोगे? नहीं करेंगे. आज तो बिल्कुल भी नहीं. सॉरी यार. All right. Welcome to the Now stream, that bro. I've told you about Kale's क्या past, हिस्सा? क्या I हाल? think I'll head into क्या the हाल चाल? rainforest to find some अरे ingredients needed for her अरे यार, medicine. खाना I'll see खा you रहा two हूँ later. इस टाइम. बुला लिया मुझे आपने. मैंने किधर बुलाया भाई? खाना खाओ बिंदास. Yeah. क्यों आँख बंद करके do खाना खाते हो क्या something to तुम? help Kale too. तुम आँख बंद करके खाना खाते हो जो तुम नहीं देख सकते? बताओ सर, बताओ. ये बहुत बोलते हैं. हाँ, लेकिन अच्छा है भाई. स्टोरी सुनना भी मजा आता है मेरे को भाई. बहुत अच्छा All लगता है. right. But I इसलिए मैं must स्किप warn नहीं you करता. two. मेरे को स्टोरी The देखना है, स्टोरी rainforest सुनना is है. a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. Okay. You must follow closely and listen to every instruction. मजे में ब्रदर. अच्छी बात है भाई. No problemo. नो प्रॉब्लम. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. ओके. Hey, Tainari. Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it's ओ भाई, कोई ज्यादा नजदीक नहीं है ये तुम्हारा लोरस? You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. ना मस्त है यार ये. huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. मैं खाली आर्गन क्वेस्ट का स्टोरी सुनता हूँ, बाकी सब स्किप. हाँ भाई, अच्छी बात है. If you could manage to मेरी gather तो मेन 4 of वही है them, ना. that would be sufficient. मैं तो सारा स्टोरी क्वेस्ट सुनता हूँ, सिर्फ है ना वर्ल्ड क्वेस्ट छोड़ के भाई. भगाओ उसको, We'll भगाओ. rendezvous World here quest once को you've भगा दो. gathered the needed amount. Oh, you are talking about this thing. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Hey Tainari! Let me take a. I'm quite glad. Hey, Tainari! अरे स्किप क्यों किया मैं? अरे सॉरी. Oh, वैसे भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. someone's calling your name. They're Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. झगड़ी करना पड़ेगा मेरे को लगता है. झगड़ी मत करो. तिगनारी को याद करो.
Tainari. Tainari, thank goodness we found you here. We Okay. were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the क्योंकि exact अभी अपन location? अकेले ना अभी तो भाई दुनिया भर के प्रॉब्लम होगी तुमको और सबके तुम्हारी मजदूरी मैं खुद करेगा. It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. Okay. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. Okay, उसका The मतलब क्या affected है? areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. अबे इसको पता नहीं क्या साला अपन ने इनाजुमा की गॉडेस को हराया था. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. मैं भी able to help with But you this. don't seem to carry a vision. Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically Okay. only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. इधर जाने का है, किसको मारने का है, बस उंगली करो भाई. विदरिंग भाई, विदरिंग भाई नहीं. किनारी भाई. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Where? Oh, look! Those plants have withered. That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. Okay. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank Got you. it. But I must warn you, don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Okay, bro. Even Don't with worry. elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. ये सब मत बताओ, ये सब You मत ready बताओ. then? Let's go. I can do it. I got it in my blood. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. There is no escape! मारा. पहले देंदरो, अरे देंदरो कैरेक्टर लगेगा इसके लिए. Just what will we come across this time?
वो फटेगा। चंद्रोग्राम उठाओ यहाँ से और इसको जाके मारो। बार लेके आओ। हमें इनसे मार को कुछ मिलता भी नहीं है। Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Shine down! उसको उसका मेन एनिमेशन मैंने करने दिया ही नहीं। वो भाई कुछ मिलता ही नहीं इनको मार के। तो ये एक बाकी है ना। Now, destroy the tumors of the withering. ओह वो यूजर कैरेक्टर। ओह वो यूज करके मारना था। Everything's returning to normal now. Sorry. Yes, thanks to you two. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, recently the rate at which the withering zone appears has been increasing. Okay. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. Okay. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Oh. Huh? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other एक sad scene conditions. यार conquest पे. नहीं. Is there no way to permanently get rid of the withering? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. Okay. It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? No, I haven't. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Okay. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. Okay. I'm sure you've heard of ley lines, right? Yes. They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Oh, bhai. Okay. Ley lines continually absorb the memories of this Alright, world, मैं कोई which are then music- funneled into Irminsul,
allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times म्यूजिक to म्यूजिक लगाओ present जैसे day. बाकी सब करते हैं। अरे फिर तो वो ये हो जाएगा ना, क्या उसे बोलते हैं, मतलब बाकी सब जैसा हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? वो मैं नहीं करता ना थोड़ा। The Dendro मेरे को फिर Archon वो is known as the कॉपीराइटेड god of मतलब wisdom because her consciousness is डीएमसी वाला directly connected to it. नॉन कॉपीराइट म्यूजिक It भी is देखना also पड़ेगा वो said that सब। the Dendro भगत Archon's मारी बहुत। power is a manifestation of Ermin's soul. पीछे तुम्हें ऐसे बोल रहे हो ना, पीछे छोटा सा म्यूजिक चला दो, मतलब लो साउंड में म्यूजिक चलाओ। And as for the withering, its emergence is related to a disease that's I'm not affecting it. one of them, so I can't do that. I mean, okay. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. Okay. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Ermin's soul. Okay. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time until a cure is found. पर भाई क्या हो गया पर भाई? All right, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Okay. गंडारवा विलेज में चलते हैं, उधर एक टेलीपोर्टेशन होना चाहिए। वैसे इधर एक टेलीपोर्टेशन है, मैं वो अनलॉक कर लेता हूँ क्योंकि इट इज क्वाइट नजीक। वो है क्या मेरे पास? ठीक है, ऑप्शन की तरह भाई। कुछ कुछ जगह पे ही टी ऑप्शन है, मतलब लिजिट मेरे को क्लाइम तो करना ही है फिर। हो जा रहा है भाई, रीजनरेट होने दो, फिर क्लाइम करके ये अनलॉक करके फिर उधर जाके वो वाला अनलॉक करके। अरे उधर तो वो ज़्यादा ही दूर है, ज़्यादा ही दूर है, ज़्यादा ही दूर है। और सिटी में आ गया मैं। शिंच May knowledge guide you. chivalry will never die. अनलॉक हो गया। ले लो भाई, नाको वीड नहीं। Useless. तो ओके, ये टेलीपोर्टेशन में पहुंच गए अपन। इसको भी अनलॉक कर लो बड़े से, फटाक से। आंदा हिल। Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering Perfectly zone you fine. reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! क्या हो गया भाई? Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. हाँ, इसको तो मैंने पकड़ा था भाई। इसको तो जैसे ही दिख गया मैं पकड़ लिया भाई। Oh, her? How could we forget? So did something happen? स्कॉलर, अच्छा वो लड़की, ये बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं।
वो तो लड़की तो अलग Let me है. see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. Okay. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. Okay. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. Okay. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? It's a light refreshing smack dragon. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that she could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? Yep. What I saw weren't hallucinations, were they? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. Okay. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Oh. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Okay. So what again? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. Okay. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. Big fan. Arre, Nice and all, thank you, but Gambler. will she Bhai. really help us? Seriously, she completely Thank you ignored very us much. the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Okay. Please, wait here for a moment. वो बुड्ढा पीछे ऐसे क्यों खड़ा है without doing anything? अच्छा वो पीछे नहीं खड़ा है वो दूसरे Take साइड खड़ा है these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Okay. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Thank you. No. Why I was should be the one parallel is thanking clear? you. You've both been लिया। a great help these last few क्लियर कर days. लिया हो गया नहीं कौन सा स्पायरल मेरा अभी बाकी है मैं स्पायरल नहीं करता क्योंकि भाई मेरे कैरेक्टर बिल्ड नहीं है अभी बिल्ड हो चुके हैं अभी करना पड़ेगा पहले नहीं करता था अभी जितना तक हो सके उतना She should still be in the करेंगे cave. भाई Let's go inside and see how she's doing. ओ वहां पे तो इधर से ही टेलीपोर्ट करते हैं ना भाई इतना के भागना है तुमको पता है ना अपने को जोंगली मिल गया ये वाले अकाउंट में नहीं दूसरे वाले अकाउंट में ये वाले अकाउंट में Still मिल be in जाएगा the cave. Let's go inside and see how she's doing.
Apatia, I am here because you wanted me to here. Hello? Hypatia? भाई दस्तक कर दो हाँ. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. भाई वो तो मर भी गया. अभी ये कैसे चल रहा है पोकेमॉन? ये कैसा कट सीन था भाई? There you are. Hypatia, are you all right? So hungry. He looks famished. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Huh? How'd things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Relax, Really? Simon. Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. तो भाई कितना मस्त है ये. ठीक है मैंगो की क्या? Looks good. This place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Okay. तो भाई ये ये क्या बात हो रही है? Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? रुको भाई चेंज वेंज नहीं पेटी देखो. लुक फॉर चेस्ट. पेटी ये काजुआ की पेटी क्यों लग रही है? अभी क्या आएगा मोना? भाई एक्सप्लोर करते करते किधर आ गया मैं? इन लोगों को मारना होता. ओके Rain outlines your fate.
shattered. Inazuma shines eternal. अचानक से अपन सील ही बन गए। हेलो, आप भी इधर हो? आप भी इधर हो? हैं? Okay. Never mind. ऊपर कैसे होगा मैं भाई? अच्छा, अरे इसकी माँ की आग। मैंने वो देखा ही नहीं पहली बारी में। फीलिंग्स अभी भी इधर हो? अरे भाई ओके, इन्वेस्टिगेट द कोड हियर। What is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Doesn't matter. I will look good later. सबसे पहले ये करूँ मैं। And you see the courtyard far down the. अरे ये वो सस्ता। अरे ये तो फोटो, अरे अब ये तो फोटो बन गया। व्हाट द हेल? Rain outlines your fate. फिर से आ गए अपन पता नहीं किधर लूप में। अब सर मजा आता है इनको मारने को। What are you doing here? The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Bow before the abyss! No, my sword! There is no escape!
सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। Disappear! Here! Worthless! Here! Worthless! Rain outlines your fate. Illusion shattered. The end is nigh. खत्म हो गया। Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. जनरल विलन। Your brother. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. Oh, The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. it isn't meaningless. But don't you Nothing fret is. now. Today will be your last. Now die! मैं इतना लोडिंग क्यों हो रहा है भाई? आई व्हाट? अबे ये क्या फालतू गिरी है? गायब हो गया। What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. व्हाट? फिर से बार बार ये हो रहा है। Sweet. अरे कोई वेलकम टू द स्ट्रीम। Which character are you pulling after Zhongli? I gun you. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Sorry, I kind of zoned out of the second thing. Are you okay? Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Okay. पानी किधर है? अरे खाना तो उठाओ, खाना उसको अपन खाना डिलीवर करने आए थे, जमीन पे गिरा दिया। और ये फ्रूट इससे बड़ी क्यों है Look at भाई? all this fruit lying around her. We can put that to good use. फ्रूट का साइज इससे सर के सर से बड़ा है। नशे। I mean शिमेरु कैरेक्टर। शिमेरु कैरेक्टर का तो पता नहीं भाई। Tainari, is that you? टाइनारी वाइनारी कोई नहीं है। अपन अकेले। Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. कोई भी भाई तो वेलकम टू द स्ट्रीम। अगर उन्हें नहीं बोला होगा तो। शिमेरु कैरेक्टर मैंने डिसाइड नहीं किया है मास्टर ऑफ गेम्स, पता नहीं मेरे को विच वन शुड आई पिक, लेकिन मैंने सुना है क्या साइनो, राइट? साइनो वो इलेक्ट्रिक वाला डीपीएस है। see. I So, see. you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. You are stupid but I can forgive you. I'm grateful that you came so quickly to save me. साइनो You even brought all this ओपी fruit. लगता है। हाँ भाई भाई। Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was Five-star likely razor from plus my chow. neighbor. लगता है मुंह से। Must have come by Okay. and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby?
Is it a little round creature? Oh? So you're able to see them too? Yes, it looks like a dendro. उसके पूरा dendro बना हुआ है round creature पर Pokemon Hold on लगता a है. second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. Okay. You needn't worry. वो drug They dealer है are. यहाँ के. हाँ भाई. They only dragged you into the dream because they hoped to buy वो ये themselves a little time in order supplier to है वो scurry supplier away. है. ये drug lord है वो supplier है. नहीं. तो वो drug lord टिनारी drug lord है. ये उसकी supplier है और वो उसके अंडर वाले काम करते हैं वो जो Pokemon जैसे दिखते हैं ना. टोकोपी जैसे हाँ वो. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? It looks like Togepi if you have seen Pokemon, and if you haven't seen Pokemon, then don't show me your face again. I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know Tignari this nahi, because the Weednari. first time I saw them was Drug also Lord. the कौन exact day Tignari my कौन है भाई? consciousness was able मेरे to को नहीं form a पता कौन connection Tignari. with Irminsul. Tinari कौन है Tinari? भाई कौन Tinari? I don't know Tinari. Even after Drug I Lord opened मेरे को my पता है. eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. Okay. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. It was Togepi. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. Okay. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. अगर I was Tinari drug convinced lord they'd है never तो show up कोहली कौन again. है? कोहली कोई नहीं But sure कोहली enough, कोहली अभी अंडर I एज saw them है. nearby उसको a अभी few टाइम है. days later, and they weren't कोहली alone. इज द टिनारी सक्सेसर. मतलब अगर टिनारी को अगर कुछ हो जाए फ्यूचर में तो फिर कोहली ड्रग लॉर्ड बनेगी. मिल गया तुमको लोर. ये एकदम एक्चुअल फैक्ट है भाई. लिख लो चलो फटाक से. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Okay, the fascinating creature. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. इन पोकेमोन लोगों के अलग क्वेस्ट है बड़े लंबे. अरे भाई. Okay. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Okay. All right, we're up, Traveler. Today's menu will feature sweet madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. हाँ यार To be पोकेमोन को honest, तो the last time बहुत had to be बड़ा when था. Tainari came पोकेमोन to का बहुत visit. बड़ा था. Okay. Big fan. Why so pro? Because I was like this only. डॉक्टर की बात करो. Make some food for. Okay. Where is the location? मतलब फायर जलाने वाला एरिया किधर है? आग लगाने वाला एरिया किधर है जैसे मैं खाना बना पाऊँ? ओ यहाँ पर है. रुको रुको रुको. कुछ तो था इधर. मेक लंच बॉक्स. अच्छा. You cook up some dishes over the. All done. Okay. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Okay. Oh, it smells amazing.
And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. ओके भाई, कैसा नाम है? हपेशा। Adventure Weird time. name. Off we go. और ये एप्पल इतने बड़े क्यों है भाई? Are you already finished cooking? यही वाला है ना, इसको लो, सबमिट गिव। Even though But, everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. अब It took me nearly 3 years before I could do so. ओ भाई, And everyone 3 at the years? academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Okay. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. I think I understand. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry, though. It appears you've already fully recovered. Okay. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoes Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Okay. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception अरे ये wasn't बूढ़े so वाला पॉट तो उधर था। limited. What the hell? Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Okay. Sages have said that Irminsul contains divine Pokemon आ knowledge, गया। and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa. So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. Okay. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom. Emotions could influence their dreams. Okay. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. Oh. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming.
I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream अरे again. खत्म कर होगा भाई वहां का था क्या ना इतनी बात करते रहते भाई गुस्सा आ रहा मेरे को Though तो I don't exactly remember what I saw, मैं सोच रहा हूँ खत्म होगा अभी clearly खत्म होगा recall बाद में the खत्म feeling. होगा I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. Okay. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. अरे भाई वो कुछ इंडियन वर्ड्स डाले जा रहे हैं यहाँ पे If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Okay, thanks. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. अरे और कितना चैटिंग करेंगे भाई ये लोग Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Okay. अरे इधर एक टेलीपोर्टर क्यों नहीं है भाई गंधर्वविल यहाँ पर जाना है नुस्ता स्पाइडरमैन Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Okay. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. Okay. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort. And now he requires your assistance. Okay. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. लोग इतना मस्त है इस इन लोगों का कपड़ा यार And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. अरे इसका क्या काम था वो तो कुछ बोला ही नहीं अरे 4 जन बहुत हो Tainari, what
was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. Okay. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. Yeah. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amurta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up Amurta receiving Darshan. something like this Kaise item bolte hain here. log? I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Okay. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Okay. Great! Next up, Sumeru City! But wait. We need to say goodbye to Kale. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. Hero. अरे उधर ही तो खड़ी है वो. अरे इंट्रोडक्शन लेटर ओके देखो जरा कैसे दिखता है ये. क्या लिखा है इधर किधर है वो ये वाला लेटर ओके. अरे इसको रीड भी नहीं कर सकते लेटर जो और रिसर्च पे information help you. Okay. Adventure time! I've been waiting for you two. Okay. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Please take care of Don't yourself. worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. Okay. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no Okay. need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Oh. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Okay. Of course we will. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here.
ओ भाई खत्म खत्म हो गया। कितना मिला मेरे को प्रीमोस? 83 यार, थोड़ा होता तो एक 10 एक पुल कर लेते, लेकिन उतना भी नहीं है मेरे पास। इसको करो यहाँ पे। बाउंसी मशरूम। ओके, कितना हो गया? 87 जमा हो गया। अरे भाई चलो छोड़ो। चलो भाई 12:30 बज गए हैं और अपेरेंटली मैं 11 मिनट से स्ट्रीम कर रहा हूँ। व्हाट? 11 मिनट से स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं? ये क्या बात हुई? क्या लैग हुआ था क्या? मैं तो 9:30 बजे स्ट्रीम शुरू किया था भाई। नहीं, 9 बजे स्ट्रीम शुरू किया था, 9:20 को। ठीक है, नेवर माइंड। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अपन अभी जा रहा है क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। ठीक है, और मिलते हैं कल, मे भी परसों। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, Let's थैंक go यू। find some treasure. शोइंग 2 आवर्स। मेरे को उधर दिखा रहा है 11 मिनट 52 सेकेंड्स। वो कभी कभी ऐसा ये होता है ना, सर्कल घूमता है ना, तो वो रिफ्रेश हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो छोड़ो, जान दो। यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एग्जिट करते हैं बिकॉज नेक्स्ट टाइम इधर से ही शुरू करेंगे। अपेरेंटली मैं कल से सोया नहीं इसलिए मैं कभी सो नहीं गया। एक्चुअली वीडियो बना रहा था मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। काट। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।